Thank you. All our esteemed dignitaries are over here, and they'll be on the stage in just a moment from now. One more time, ladies and gentlemen, please help me extend a warm welcome to Honorable Chief Minister of Gujarat, Shri Bhupendra Bhai Patel. To grace the event, we have with us Honorable Union Minister for Health and Family Welfare and Chemicals and Fertilizers, Government of India, Shri Dr. Mansukh Mandavia ji. We are also graced with the presence of Dr. V.K. Paul, Member, Niti Aayog, Government of India. Honorable Health Minister of Gujarat State, Shri Rishikesh Bhai Patel. Ms. S. Aparna, Secretary, Department of Pharmaceuticals, Ministry of Chemicals and Fertilizers, Government of India. Shri Rajkumar, Chief Secretary, Government of Gujarat. Shri S.J. Haider, ACS Industries, Government of Gujarat. Shri Kamlesh Kumar Pant, Chairman, NPPA. Shri Suresh H. Vazirani, Chairman, TransAsia Biomedicals Limited. And also we have with us Shri Tushar Sharma, Managing Director and General Manager, Abbott and Vascular, Chairman FICCI Medical Device Committee. Thank you very much all the esteemed dignitaries for gracing today's very important event, and we are sure we shall benefit from the knowledge that will be shared by you. I now Thank you. I would now humbly request the esteemed dignitaries on the dais to kindly step forward for the lamp lighting.
Thank you, everyone. May Almighty always keep us blessed. When we have such esteemed dignitaries to grace this important event of today, we would like to welcome them now. Foremost, I would like to request Ms. S. Aparna, Secretary, Department of Pharmaceuticals, to kindly welcome Honorable Chief Minister of Gujarat, Shri Bhupendra Bhai Patel, with a shawl and a green certificate. Thank you. I would now like to request Shri Kamlesh Kumar Pant, Chairman, NPPA, to kindly welcome Honorable Union Minister Shri Mansukh Mandaviya with a shawl and a green certificate. Thank you. I would now like to request Shri Ravindra Pratap Singh, Joint Secretary, Department of Pharmaceuticals, Government of India, to welcome Dr. V.K. Paul, Member, Niti Aayog, Government of India. I would like to request Shri Ravindra Pratap to kindly welcome Honorable Health Minister of Gujarat, Shri Rishikesh Bhai Patel. I would now like to request Shri Manab Majumdar, DSG FICCI, to kindly welcome Ms. S. Aparna, Secretary, Department of Pharmaceuticals, with a shawl. Would request Mr. Manab to kindly welcome Shri Rajkumar, Chief Secretary, Government of Gujarat. Mr. Manab will now welcome Shri S.J. Haider, ACS Industries, Government of Gujarat. Would request Mr. Manab to kindly welcome Shri Kamlesh Kumar Pant, Chairman, NPPA. Would request Mr. Manab to kindly welcome Mr. Suresh H. Vazirani, Chairman, TransAsia Biomedicals Limited. And would request him to kindly welcome Shri Tushar Sharma, Managing Director and GM, Abbott and Vascular, Chairman, FICCI, Medical Device Committee, with a shawl. Thank you, everyone. It is indeed a pleasure to have you all over here once again. I would now like to brief our dignitaries and participants that a structured buyer-seller meet is happening at MedTech Expo, for which 200 plus foreign delegates from 53 countries are present amongst us. Let's watch a short video to recognize their participation. We extend good wishes to all the participants of our MedTech Expo 2023.
Now, in order to formally start the event, I would request Ms. S. Aparna, Secretary, Department of Pharmaceuticals, Ministry of Chemicals and Fertilizers, Government of India, to deliver the welcome address and set the tone of the event. Over to you, ma'am. Honorable Chief Minister of Gujarat, Shri Bhupendra Bhai Patel Sahib, Honorable Union Minister for Health and Family Welfare, Chemicals and Fertilizers, Dr. Mansukh Mandavia Sahib, respected senior member in the Niti Aayog for Health, Dr. V.K. Paul Sahib, State Health Minister, Shri Rishikesh Bhai Patel Sahib, Chief Secretary Gujarat, and my senior colleague, Shri Rajkumar Ji, colleagues and industry representatives on the dais, esteemed members of the industry, of various industry associations representing medical devices and diagnostic sectors here, over 200 delegates from 47 countries who have joined the Biocellar meet, 400 plus exhibitors representing the cream of the industry, including over 70 startup entrepreneurs, representatives from various state governments, research institutions, our organizing partners in FICCI, members of the media, ladies and gentlemen. It is indeed an honor to welcome the entire who's who of the medical device sector present at the inaugural session of the first India MedTech Expo 2023, being organized by the Department of Pharmaceuticals as a co-branded event to the G20 Health Ministers Meet, which is being organized at Gandhinagar by the Ministry of Health and Family Welfare. I am indeed grateful to each one of you for having accepted our invitation and for your enthusiastic participation. Thank you all and a very warm welcome. As many of you would be aware, recognizing the potential of the medical devices sector, the Government of India has launched a slew of policy and programmatic interventions to promote and support accelerated growth of the medical devices sector. The National Medical Device Policy that identifies regulatory streamlining, enabling infrastructure, facilitating R&D and innovation, HR development, and brand positioning as areas of focus was approved just recently in April 2023 by the Union Cabinet. The domestic capacity in the medical devices sector is being boosted with 37 unique products already commissioned for production in India under the PLI scheme, and these include the high-end products for which we were earlier import dependent, such as CT scan, cath lab, anesthesia units, C-arm, and LINAC, etc. And we hope that India will be able to achieve self-reliance even in these high-end products. Infrastructure is being created through 4 greenfield medical devices parks coming up in the country and a new scheme for common facilities in existing clusters and for strengthening the testing infrastructure in our country, which is so essential to maintain high quality of our products. Skilled manpower for industry and for research will be generated with a scheme which has newly been approved just this month by our Honorable Minister, Dr. Mandavia, to support multidisciplinary courses in the existing institutions. Friends, you can see that a multi-pronged approach is quite apparent. This Indian MedTech Expo 2023 is one more effort in this series of initiatives to promote our industry to grow in a very systematic manner. We do know that the medical devices constitute the fastest growing segment of the healthcare sector.
While self-reliance is important, it is also necessary to strengthen the capability of our industry to integrate with and eventually lead the global value chain. Therefore, what we would like to see under our policy is that this growth in domestic capacity is driven by quality, innovation, synergy across the sciences, patient centricity, and global competitiveness. Ladies and gentlemen, this Expo, which is being organized under the leadership of the Union Minister, Dr. Mandavia, and the support of the Honorable Chief Minister, Shri Bhupendra Bhai, is an attempt to showcase all these aspects through the large industry participation, ranging from established Indian players to emerging startups to global giants, producing everything from a syringe which costs just a few rupees, to stents which cost maybe thousands of rupees, to high-end scanning equipment which cost over crores of rupees. In such a large market as in India, there is space for each one of you to make your mark. The demand forecasting session and the state session that we have organized will reveal the future demand trajectory and the incentives being provided by states that will help investors to make their plans. Thousands of buyer-seller interactions are already scheduled for these 3 days, and this will better link Indian industry to the world. We hope that the R&D pavilion and the future pavilion in the Expo will get you all excited about the immense power of Indian innovation in MedTech. Alongside this, we also have a conference where we will try to generate meaningful discussions and build a shared understanding of the challenges, the opportunities, and the way ahead. Our medical devices industry, as Honorable Minister well knows, has been very active in providing policy inputs and in identifying concerns. And we in the department have greatly benefited from this real-life feedback. I'm certain that the exchange of views in the conference, the networking, the sharing of experience in our Expo will take forward this vibrant interaction and help us in our common goals towards a robust, self-reliant medical devices sector with the overarching objective of contributing to universal health care, not just for India, but also for the globe. I look forward to the guidance and inspiration from our inaugural speakers, Honorable CM Sir, Honorable Minister Sir, and Honorable Dr. Paul. While extending a very warm welcome to all of you gathered here, I must recognize the guidance, the support, and the inspiration that we in the department have constantly received from both Dr. Mandavia here and from Dr. Paul here, and we do hope, sir, that we will live up to your expectations. Finally, I would like to acknowledge our DOP team, led by our Joint Secretary, R.P. Singh Ji, and the FICCI team, led by Shri Praveen Mittal, for their tremendous efforts over the past days. Like others, I believe in saying thank you in advance. So thank you very much, and a very warm welcome to all of you here. Thank you, sirs. Thank you very much, ma'am, for your warm welcome words and the informative address. I would now like to welcome Shri Suresh H. Wazirani, Chairman TransAsia Biomedical Limited, to deliver his address. Namaskar. Honorable Chief Minister Sahab, Bhupendra Patel ji, Honorable Union Minister for Health and Family Welfare, Chemicals and Fertilizers, Dr. Mansukh Mandavia ji, Dr. V.K. Paul, Member Niti Ayog, Shri Rishikesh Patel,
Honorable Health Minister of Gujarat, and Madam A. Sapanna, Secretary, Department of Pharmaceuticals, Shri Rajkumarji, Chief Secretary, Gujarat, and Shri Kamlesh Pant, Chairman, NPPA. Thank you for giving me this opportunity to speak to this august international gathering on behalf of the entire medical devices industry of India. It's a real privilege to have over 250 international delegates from 70 countries, including many health ministers of G20 nations. I believe this is the first time in the history of India that a major international event has been organized focused entirely on MedTech. I think this is something that shows where India is going. This speaks highly of the great vision of our Prime Minister Modi ji and the dynamic leadership of Dr. Mansukh Mandaviya ji, that their vision for making India a global manufacturing hub for medical devices. Sir, under your leadership, in just 2 short years since you took charge of Health Ministry, you have given a great vision for India to be the global manufacturing hub and have announced several growth-oriented policies, such as India's first National Medical Devices Policy, new Drugs and Medical Devices Bill, production-linked incentive for giving a boost to Make in India, and significant financial support to industries for expanding R&D, which is so very important for Make in India. I believe this is the beginning of a great new era of Make in India, which can help capture at least 10% market share in the global market for devices, which is expected to reach $850 billion by 2030. Our Honorable Prime Minister has repeatedly shared his vision of health for all, where everyone, rich or poor, can have access to modern health care. This is so very important for making India a healthy and happy country. The COVID pandemic was a great eye-opener. Many countries, including India, realized that providing good health care is not just a good thing to do or just something good for economy, but providing good health care is a realization that absolutely essential for national security of the country. In today's world, wars are not fought only on the borders. Pandemics like COVID, whether natural or man-made, can cause a much larger loss of life than many wars. I'm sure that we have not forgotten the helpless situation our country faced when we had to deal with COVID, when there was not a single manufacturer of COVID kits in India, not a single manufacturer of PPPs in India, and we had hardly any ventilators in the country. It is thanks to the enterprising people of India that very soon these things could be manufactured. But can a nation of 1.3 billion people be left at the mercy of other nations at a time like pandemic? Hence, I believe it is absolutely essential to equip our country with not only modern guns and missiles, but also with Make in India
medical devices to quickly provide health care to its citizens in case of any pandemic or other medical emergency. Unfortunately, with India's current situation of being dependent on imports for over 80% of medical devices, I believe it's time for India to act quickly to formulate a national health security policy to achieve Make in India from 20% to 80% in next 8-10 years. A big change from current 80% imports to 80% Make in India is a big challenge. Some people may call it impossible. Some people may call it daydreaming. But let me remind you that under India's leadership of Prime Minister Modi in recent past, we have achieved many so-called impossible goals. Today, 98% of the cars sold in India are made in India. 97% of cell phones which are sold in India are made in India. 98% of the drugs and medicines sold in India are made in India. And very soon, 95% of computers and laptops sold in India will also be made in India. So if we can do all these things, why do we think it's impossible to make 80% of medical devices in India? I'm sure that the leadership of our dynamic health minister, Dr. Mandaviya ji, very soon we will see dynamic policies for achieving a similar goal for medical devices. Before I conclude, I would like to take a minute to present my company Transasia's story of Make in India success, transforming from a 100% importing company to 100% Make in India company and becoming India's largest IVD producer and exporter to more than 100 countries across the world. I was fortunate to be the founder of Transasia 44 years ago with just rupees 250 in my pocket, but a big dream of making India a healthy and happy nation by providing innovative, reliable, and affordable Make in India blood testing systems. Today, over 150 crore blood tests are done on our equipment every year. That is 150 blood tests every second. This is also an example of how in India everyone has an equal opportunity to succeed. Half a minute. This is how a son of a poor refugee family from Karachi who landed by boat in Mumbai could, with determination, hard work, honesty, and support from government, could start a diagnostic company with just 250 rupees and become India's largest IVD company worth billions of dollars. So friends, this is our great India, and I'm so very proud of being an Indian. Thank you, and Jai Hind. Thank you very much, sir, for your important address. I would now like to welcome Shri Dr. V.K. Paul, Member, Niti Aayog, Government of India, to share his thoughts with us. Over to you, sir. Namaste, good afternoon. Honorable Chief Minister of Gujarat,
Shri Bhupendra Bhai Patel Sahab, Honorable Union Minister of Health and Family Welfare, Chemicals and Fertilizers, Dr. Mansukh Mandaviya ji, Honorable Minister of Health, Gujarat, Hrishikesh Patel ji, Secretary Pharmaceuticals, Ms. Aparna ji, Chief Secretary Gujarat, Chairperson NPPA Kamlesh Pant ji, distinguished leadership of the pharmaceutical industry on the dais, med devices and pharmaceutical industry on the dais and in the audience, excellencies, invitees from all over the world, friends, I'm so honored to be here at the launch and the inauguration of MedTech Expo 2023 India. As has been stated, this is a historic moment. Such a large gathering of MedTech industry and other stakeholders in one place is truly unique, and this bodes really well for the future of this great and much changing industry in our nation. Medical device sector is an essential and integral part of the health sector. It's integral to the health system and to the healthcare of Indian citizens and of all citizens indeed. In recent times, advancements in technology and innovation have changed the landscape and offerings of the medical device sector in more than one way. Indian MedTech sector has accelerated its growth and its excellence, and it is now at an inflection point to move in the direction of exponential growth, both in terms of quantity, quality, as well as its reach globally. There are 750 to 100 domestic medical device manufacturers in India, accounting for 65% of the market. The startup ecosystem in India's medical devices sector is diverse and vibrant, with more than 250 organizations engaged in innovations for addressing critical health needs. The efforts and the unwavering commitment of the government, under the inspirational leadership of our beloved Prime Minister, have brought the much needed, much awaited, and much timely turbocharge and resilience and resurgence in the sector in recent times. We have seen the release of the National Medical Devices Policy 2023. We have seen progress on the Medical Devices Rules 2017 implementation, and we have seen the rapid development of medical devices parks in 4 locations in the country. We have also seen the emerging medical devices policy leading on to also research and development policy in the draft stage for the pharmaceutical and medical devices sector. In recent years, innovation has also received a huge impetus, and one such impetus has come from Atal Innovation Mission anchored at the Niti Aayog. This aims to create an innovation and entrepreneurship ecosystem in the educational institutions of our country, and we are already seeing results of this innovative initiative on the ground. The formulation of the R&D and innovation policy will give further impetus to research in the industry, in academia, as well as at the interface of the two main sectors. Adoption of latest technology such as artificial intelligence, machine learning, virtual reality, robotics, wearable devices, and remote health monitoring systems are crucial as we move forward with new products in the MedTech space. The future of medical devices is poised to undergo huge transformation driven by ongoing technological revolutions. Miniaturization of devices, integration with Internet of Things, use of 3D printing,
and creation of customized medical devices are some of the new elements, new domains that are going to change the healthcare system in our country. The Government of India is committed to improving every spectrum of healthcare industry. In the past few years, efforts have been made to improve the entire value chain by introducing new solutions related to digital health infrastructure and skilling of manpower. Setting up of National Medical Devices Export Promotion Council is aimed at boosting our exports to other countries. Future lies in forming global partnerships and alliances for developing medical devices and to make them available at affordable cost in primary care settings, secondary care, tertiary, and tertiary care settings all over the world. And that's the goal with which India would perceive its vision of advancing the MedTech sector. I would say that the Indian medical device industry is a shining example of innovation and development. It exemplifies the motto of Atmanirbhar Bharat by promoting domestic production and supporting innovation. Niti Aayog, like all the other organs of the government, looks forward to collaborating and assisting the stakeholders in a robust manner to support this sector to make India as the top hub of medical devices of the world. Thank you very much. Jai Hind. Thank you very much, sir, for your insightful address. The latest advancements in medical technology and research, providing insights into the future of healthcare, are going to be beneficial to one and all. A MedTech Expo compendium has been prepared, which showcases the cutting-edge innovations that are shaping the industry. I would humbly request the esteemed dignitaries on the dais to kindly unveil this informative booklet. Thank you, everyone. We now announce the launch of future and R&D pavilion booklets that stand as testament to the boundless potential of research and development in the field of medical technology and visionary endeavors that have the power to shape the future of healthcare. I make a humble request to all the esteemed dignitaries on the dais to launch these two booklets. Thank you, everyone, for doing the honors. A coffee table book dedicated to the Indian pharmaceutical sector has been prepared to highlight the significant contributions, advancements, and innovations within the industry, showcasing its role in healthcare and the global economy. This book serves as a visual and informative tribute to the Indian pharmaceutical industry's remarkable journey. I would humbly request the esteemed dignitaries on the dais to kindly launch this coffee table book.
Thank you very much. Ladies and gentlemen, thank you. Ladies and gentlemen, who wants to use the headphones can take over the headphones and switch to channel number 1 for English. अब मैं अत्यंत आनंद और गर्व के साथ भारत सरकार के माननीय केंद्र स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण और रसायन एवं उर्वरक मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया जी से अपने विशेष संबोधन देने के लिए आमंत्रित करना चाहती हूँ। G20 समिट अंतर्गत आयोजित इंडिया मेडटेक एक्सपो 2023 के इनॉग्रेशन अवसर पर हमारे बीच में उपस्थित राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेंद्र भाई, नीति आयोगना सभ्य डॉक्टर वी.के. पॉल जी, राज्यना यशस्वी आरोग्य मंत्री श्री ऋषिकेश भाई पटेल जी, हमारे फार्मा विभाग की सेक्रेटरी एस अपर्णा जी, राजीव कुमार जी, एस.जे. हैदर जी, कमलेश कुमार पंत जी, तुषार शर्मा जी, सुरेश वजीरानी जी, सभी उपस्थित डेलीगेट्स भाइयों एवं बहनों, आज मेरे पहले वक्ताओं ने देश में मेडिकल डिवाइस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी, देश की क्षमता, उसके बारे में विस्तृत रूप में बताया है। दोस्तों, मैं आपको आज के अवसर पर ये बताना चाहता हूँ कि मोदी जी के नेतृत्व में देश बदल रहा है, देश आगे बढ़ रहा है और नया भारत का निर्माण हो रहा है। दोस्तों, नया भारत कैसा हो? प्रधानमंत्री जी ने जब से कार्य संभाला है तब से एक वर्क कल्चर में 360 डिग्री बदलाव किया है। मैं सालों से राजनीति में हूँ। सरकार आती है, सरकार डिसीजन करती है, लेकिन ये डिसीजन टोकन के रूप में होता है। मोदी जी ने अपने कार्यकाल में जो डिसीजन किए हैं, मोदी जी की जो सोच है वो टोकन अप्रोच वाली नहीं है। मोदी जी हमेशा टोटल में सोचता है। हमें डेवलपमेंट करना है, विकास करना है, आगे बढ़ना है, तो हमें होलिस्टिक अप्रोच लेना होगा। हमें 360 डिग्री से डिसीजन करना पड़ेगा। केवल हम हेल्थ सेक्टर के बारे में सोचें कि हम डिस्पेंसरी चालू कर दें, नहीं होगा। दोस्तों, जब डिस्पेंसरी चालू करते हैं तब डिस्पेंसरी में डॉक्टर चाहिए, डिस्पेंसरी में मेडिसिन चाहिए, डिस्पेंसरी के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। एक होलिस्टिक अप्रोच जब बनता है तब एक हेल्थ बनता है, तब एक डिस्पेंसरी बनता है। आज तक यही स्थिति चलती रही। त्रुटक सोच से देश एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ आगे नहीं बढ़ सका। लेकिन जब से मोदी जी ने अपने कार्यकाल के दरमियान जो डिसीजन किया है, मैं आज हम फार्मा सेक्टर के लिए, मेडिकल डिवाइस के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। मेडिकल डिवाइस सेक्टर आज देश में एक ऐसा सेक्टर है, बिकॉज इंडिया इज ए इमर्जिंग कंट्री,
इमर्जिंग इकोनॉमी, मिडिल क्लास बढ़ रहा है, अपर मिडिल क्लास बढ़ रहा है, 1.3 बिलियन पॉपुलेशन है, देश की ज़रूरतें बढ़ रही है। ऐसी बढ़ती ज़रूरियातों के सापेक्ष में देश में फार्मा सेक्टर में आत्मनिर्भरता कैसे आए? तो केवल हम बात करते रहेंगे कि आत्मनिर्भरता की दिशा में हमें जाना है, विषय पूरा नहीं होगा। आपने देखा होगा ड्यूरिंग कोविड क्राइसिस देश ने उस वक्त सोचा और मोदी जी ने हमें डायरेक्शन दिया कि देश में 52 ऐसा एपीआई है जो एपीआई देश में बनता ही नहीं है, और ये एपीआई 95% एबव हम इंपोर्ट करते हैं, वो भी चौक्कस कंट्री से करते हैं। वो देश में नहीं आएंगे या तो वो कंट्री सप्लाई बंद कर देगी, देश की स्थिति क्या होगी? मोदी जी ने कहा आत्मनिर्भर भारत के तहत हम इंडिया में एपीआई बना सकते हैं। हमारे अपर्णा जी सब लोगों ने उसके लिए स्कीम डिजाइन की, PLI 1 14,000 करोड़ रुपीस, और देश ने तय किया। दोस्तों, ये देश में ब्रेन पावर और मैन पावर और एंटरप्रेन्योरशिप की ना कभी कमी थी ना आज कमी है। सवाल इतना ही है उसको अवसर देना, समय इतना ही है उसको अपॉर्चुनिटी देना। मोदी जी ने केवल यही किया। PLI 1 स्कीम के माध्यम से 43 एपीआई को आइडेंटिफाई करके देश में उसको मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए क्या दिक्कत है? दोस्तों, आवश्यक होता है डिसीजन के पीछे कंसल्टेशन का। हमारी इंडस्ट्रीज के साथ डिटेल कंसल्टेशन हुआ। क्यों इंडिया में ये एपीआई नहीं बनता है? इंडिया की क्षमता नहीं है क्या? इंडिया पहले पेनिसिलिन का एपीआई बनाता ही था, लेकिन क्यों इंपोर्ट होने लगा? तो आइडेंटिफाई हुआ कि देश में रिसर्च है, देश बना भी सकता है, बनाता भी था, लेकिन दुनिया ने हमसे सस्ता बनाना चालू किया। हमने समय के साथ नीति को नहीं बदला, पॉलिसी नहीं बदला, रिफॉर्म नहीं किया। आज हमारी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ज़्यादा है, इसलिए हम नहीं बना पा रहे हैं। क्या करना चाहिए? तय किया कि भाई कितने % हमारी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट और इंटरनेशनल मार्केट के सापेक्ष में गैप कितना है। आइडेंटिफाई हुआ कि एपीआई में 20%, 10% इतना ही परसेंटेज PLI स्कीम के लिए उसको दिया गया। इतना ही नहीं, देश में वो मैन्युफैक्चरिंग होना चालू हो गया। लेकिन भविष्य में इंडिया एपीआई में, इंडिया मेडिकल डिवाइस में आगे बढ़े, नॉट ओनली फॉर फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड, हम फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड बने। उसके लिए हमें डिसीजन करना होगा। उसमें से 3 बल्क ड्रग पार्क का डिसीजन किया गया। 1000 करोड़ रुपीस 3 बल्क ड्रग पार्क ने मोदी जी ने अप्रूवल दिया। 4 मेडिकल डिवाइस पार्क। दोस्तों, 4 मेडिकल डिवाइस पार्क के द्वारा एक मेडिकल डिवाइस के लिए इकोसिस्टम कैसे बने, उसके लिए विचार किया गया। इतना ही नहीं, हम मेडिकल डिवाइस पार्क बना रहे हैं, बल्क ड्रग पार्क बना रहे हैं, लेकिन 10,000 से अधिक यहाँ MSME फार्मा इंडस्ट्रीज है। हमारे फार्मा इंडस्ट्रीज क्वालिटी मैन्युफैक्चरिंग करे, उसके लिए क्या करने की आवश्यकता है? दोस्तों, कंसल्टेशन से आउटपुट निकला कि हमें गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस करना है तो हमारा प्लांट को अपग्रेड करने के लिए असिस्टेंस देना पड़ेगा। इंडस्ट्रीज असिस्टेंस स्कीम के रूप में सहयोग देने के लिए पॉलिसी लाई गई, मेडिकल डिवाइस पॉलिसी लाई गई। दोस्तों, समय समय के साथ रिसर्च और इनोवेशन की भी आवश्यकता होती है। रिसर्च और इनोवेशन के लिए फार्मा रिसर्च पॉलिसी भी लाई गई। इंडस्ट्रीज और एकेडेमिया लिंकेज के लिए नाइपर को सशक्त किया गया। नाइपर के द्वारा आज मेडिकल डिवाइस सेक्टर में MSME है, उसको कुछ रिसर्च करना है, किसी को इंडिविजुअल रिसर्च करना है। दोस्तों, सालों तक हम ब्लॉक रहे। हमारे ICMR के इंस्टीट्यूट, हमारे नाइपर इंस्टीट्यूट सरकार के लिए दिया गया, रिसर्च ही करते रहे, लेकिन इंडस्ट्रीज, कोई एंटरप्रेन्योर्स, कोई रिसर्च साइंटिस्ट, कोई इनोवेटर, वो भी रिसर्च करना चाहे तो
गवर्नमेंट का ये दायित्व होना चाहिए, उसके लिए विंडो ओपन होना चाहिए। दोस्तों, मोदी जी ने आईसीएमआर की सभी रिसर्च इंस्टीट्यूट, वन हेल्थ के इंस्टीट्यूट, दोस्तों नाइपर, जिसको भी रिसर्च करना है प्रोजेक्ट बेस्ड रिसर्च कर सकते हैं, उसके लिए विंडो ओपन कर दिया गया। एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ हम मेडिकल डिवाइस सेक्टर में, फार्मा सेक्टर में आगे बढ़ रहे हैं। आज देश में 70% मेडिकल डिवाइस हम इंपोर्ट कर रहे हैं। देश में मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, इकोसिस्टम क्रिएट करने के लिए क्या करना चाहिए? दोस्तों, आप यहाँ जो एग्जीबिशन बनाया है ना, दोस्तों मैं दुनिया में बहुत, मुझे आना जाना रहता है, कई ऐसी इवेंट में मैं जाता हूँ, एग्जीबिशन देखता हूँ, लेकिन मेरा सुझाव है, मैंने आज का एग्जीबिशन देखा नहीं है, लेकिन जिन्होंने देखा उन्होंने मुझे बताया है, मेरा आग्रह है कि दोस्तों एग्जीबिशन देखना। ये एग्जीबिशन ऐसे बनाया गया है जब कोई रुचिपूर्वक, ये मेरी देश की मेडिकल डिवाइस इंडस्ट्रीज को अट्रैक्ट करने के लिए, उसको बढ़ावा देने के लिए जो एक होलिस्टिक कमिटमेंट है, जब सरकार सोचती है, मेरा एक एक ऑफिसर सोचता है, मेरी इंडस्ट्रीज सोचती है, एक साथ में मिलके बेस्ट प्रैक्टिस, बेस्ट एग्जीबिशन कैसे करा जा सकता है। दोस्तों, हम हिंदुस्तान के लोग हैं, हमारे पास गीता जैसे शास्त्र है जो हमें कर्मयोग सिखाता है। दोस्तों, हमें भक्ति योग सिखाता है। मैं मानता हूं कि जब आप कमिटमेंट के साथ कोई काम करते हैं ना, तो उसका आउटपुट भी बेस्ट होता है। हमारे लिए सभी चीज कॉमर्स नहीं होती है भाई, कई चीज कॉमर्स होती है। फॉर एग्जाम्पल, आप रेस्टोरेंट पे जाके खाना खाते हैं, वहाँ ब्रेड बनती है, वहाँ समोसा बनता है। दोस्तों, बनाने वाले के लिए ये कॉमर्स है, लेकिन जब ये खाना, ये ब्रेड, ये समोसा, ये स्वीट आपके घर में बनते हैं, और घर में बनने के अलावा भी जब माँ बनाती है अपने बच्चे के लिए, तब उसमें प्रेम मिल जाता है। और जब प्रेम के साथ माँ अपने बेटे के लिए खाना पकाती है, तो दोस्तों एक कर्मयोग के साथ भक्ति योग मिल जाता है, उसका आउटपुट बेस्ट से बेस्ट होता है। मैं अपर्णा जी और उसकी टीम को अभिनंदन देना चाहता हूँ, जिन्होंने इतना बेस्ट यहाँ एग्जीबिशन बनाया है। दोस्तों, मैं अवश्य मानता हूँ मेडिकल डिवाइस सेक्टर के लिए आज ऑटोमेटिक रूट से एफडीआई को ओपन किया गया है। हर दिन मुझे कोई न कोई दुनिया की मल्टीनेशनल कंपनी आके मिलती है, उसका सीईओ आके मिलता है। हमें सद्भाग्य ये बात का है कि मल्टीनेशनल कंपनी दुनिया की कोई भी कंट्री की हो, लेकिन उसका सीईओ इंडियन, ज़्यादातर कंपनी का सीईओ इंडियन होता है। और जब आके मुझे मिलता है कि हमें मेडिकल डिवाइस सेक्टर में इंडिया में इन्वेस्ट करना है, आप लोगों ने मेडिकल डिवाइस सेक्टर में बहुत रिफॉर्म किया है, पॉलिसी रिफॉर्म किया है, इकोसिस्टम क्रिएट की है, हम इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। दोस्तों, ये एक्सपो G20 समिट के साथ अहमदाबाद में इसलिए रखा है, अहमदाबाद इज ए बेस्ट डेस्टिनेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट इन मेडिकल डिवाइस सेक्टर। गुजरात एक बेस्ट डेस्टिनेशन है, यहाँ बनी हुई इकोसिस्टम है, एंटरप्रेन्योरशिप भी है, स्किल मैन पावर भी है, और दोस्तों गवर्नमेंट की, स्टेट गवर्नमेंट की और सेंट्रल गवर्नमेंट की विल भी है। उसका लाभ लेके आप गुजरात में और इंडिया में इन्वेस्ट करिए, और समय समय पर आप आपका सुझाव भी हमें देते रहिए, आप आपका इनपुट्स भी हमें देते रहिए। हम हमेशा ट्रांसपेरेंट पॉलिसी पर आगे बढ़ते हैं। हमारे लिए इंडस्ट्रीज ही सब कुछ है। हम जो भी डिसीजन करते हैं इंडस्ट्रीज के साथ कंसल्टेशन के आधार पर करते हैं, इंडस्ट्रीज के सुझाव के आधार पर करते हैं। हम कोई पॉलिसी बनाते हैं, दोस्तों टेबल पर बैठ के मेरे 5 अफसर और एक मिनिस्टर बैठ जाते हैं, पॉलिसी नहीं बनती है। उसके लिए डिटेल्ड स्टेक होल्डर कंसल्टेशन होता है,
और उसमें से जो निकलता है वो हमें आगे बढ़ाने में सुविधा कर देता है। यही सुविधा के साथ दोस्तों हमें आगे बढ़ना है। मैं अपेक्षा करता हूँ कि आप लोग 2 दिन इस समिट में उपस्थित रह के अपना इनपुट्स भी दें, आपका एक्सपीरियंस भी शेयर करें और भविष्य में हम मेडिकल डिवाइस में इंपोर्ट डिपेंडेंसी को कम करें और देश को मेडिकल डिवाइस सेक्टर में आत्मनिर्भरता की ओर आगे ले जाए, ये ही आपसे अपेक्षा। धन्यवाद। माननीय मंत्री महोदय, आपके प्रोत्साहनपूर्ण शब्दों के लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जिनके सक्षम नेतृत्व, जिनके निरंतर मार्गदर्शन और जिनकी दूरदर्शी नीतियां गुजरात के विकास और प्रगति के लिए अति महत्वपूर्ण हैं, वैसे हमारे गुजरात राज्य के माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल को आइए उनके विशिष्ट संबोधन के लिए तालियों की गड़गड़ाहट के साथ आमंत्रित करते हैं। ડિસ્ટર્બ થયું? केंद्रीय औषध विभाग द्वारा आयोजित इंडिया मेडटेक एक्सपो के शुभारंभ के दिव्य अवसर पर मेरे साथ मंचों पर उपस्थित केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख भाई मांडविया जी, मेरे साथी मंत्री ऋषिकेश भाई पटेल, नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वी.के. पॉल, मुख्य सचिव श्री राजकुमार जी, केंद्रीय सचिव श्री एस. अपर्णा जी, अधिक मुख्य सचिव एस. जे. हैदर, केंद्रीय सह सचिव श्री रविंद्र प्रताप सिंह, एनपीपीए के चेयरमैन श्री कमलेश कुमार पंत, एफआईसीसीआई के मेडिकल डिवाइसेस कमेटी के अध्यक्ष श्री तुषार शर्मा जी, मेडिकल एवं फार्मा क्षेत्र के सभी महानुभाव, आमंत्रित अतिथिगण, प्रेस मीडिया के मित्र, सभी को मेरा नमस्कार। महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल और विश्व नेता और प्रधानमंत्री परम आदरणीय श्री नरेंद्र भाई मोदी की जन्मभूमि गुजरात में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। गुजरात के सपूत सरदार साहब ने अनेकता में एकता का मंत्र अपनाकर अखंड भारत का निर्माण किया। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने स्वराज को सुराज्य में बदलने की दिशा दिखाई है। सुराज्य का अर्थ है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। स्वास्थ्य सेवाएं, चिकित्सा सुविधाएं और दवाएं सामान्य जन, गरीब जन, वंचित और हाशिए पर पड़े लोगों पर तक पहुँचे, यही सुराज्य है। यहाँ आयोजित मेडटेक एक्सपो इसी तरह के निरामय परिस्थिति को बनाने की दिशा में एक अच्छा कदम है। मुझे विश्वास है कि जो भी इस मेडटेक एक्सपो में आएगा वह फ्यूचर ऑफ डिवाइसेस, डायग्नोसिस और डिजिटल के मंत्र को साकार होता देख पाएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने वर्ष 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने की संकल्प की घोषणा की है। इस समय के दौरान भारत को कैसे ग्लोबल मेडटेक हब बनाया जाए, यह एक्सपो इसके लिए एक दिशा निर्धारित करेगा, ये मेरा विश्वास है। इस एक्सपो के आयोजन ने मेडटेक इंडस्ट्रीज से जुड़े एंटरप्रेन्योर्स,
स्टार्टअप्स, हॉस्पिटल्स, रिसर्च और इन्वेस्टर्स सहित सभी स्टेक होल्डर्स को एक ही छत के नीचे आने और इस सेक्टर की प्रोग्रेस को लेकर एक साथ चर्चा करने का अवसर प्रदान किया है। एक समय था जब देश में स्वास्थ्य सुविधा का दायरा बहुत सीमित था, संसाधनों की कमी हुआ करती थी। यदि किसी व्यक्ति को कोई गंभीर बीमारी हो या हृदय में कोई ऑपरेशन का स्टेंट लगाना हो, तो कोई कृत्रिम अंग ट्रांसप्लांट करवाना हो, तो अक्सर विदेश और महंगे साधनों पर हमें निर्भर रहना पड़ता था। लेकिन आज तस्वीर बदल गई है। आज हमारा देश आत्मनिर्भर हो रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई के नेतृत्व में भारत ने सदी की सबसे बड़ी महामारी का डट कर सामना किया। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से विश्व के 100 से अधिक देशों में कोरोना वैक्सीन पहुंचाकर वसुधैव कुटुंबकम के हमारे आदर्श को चरितार्थ भी किया है। प्रधानमंत्री जी ने महंगे हेल्थ सर्विसेज, इक्विपमेंट और मेडिसिन्स को सामान्य जन और गरीब जन के लिए आसानी से उपलब्ध कराया है। इतना ही नहीं, उन्होंने मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत भारत में ही मेडिकल डिवाइसेस और मेडिसिन्स के निर्माण को भी प्राथमिकता दी है। उनके इन सभी प्रयासों का परिणाम है कि आज भारत विश्व की फार्मेसी बन गया है। मेरा मानना है कि इस एक्सपो के लिए गुजरात का चयन सही और सामयिक है। गुजरात देश के विकास का रोल मॉडल है। गुजरात मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, फार्मास्यूटिकल सेक्टर, एग्रीकल्चर और सोशल सेक्टर, इन सभी में एक अग्रसर राज्य है। फार्मास्यूटिकल सेक्टर की इंडस्ट्रीज के लिए गुजरात फेवरेट डेस्टिनेशन है। आज की स्थिति की बात करें तो गुजरात में फार्मा सेक्टर की 5,600 से अधिक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स काम कर रही है। सौराष्ट्र के राजकोट में मेडिकल डिवाइसेस पार्क और दक्षिण गुजरात के झगड़िया में बल्क ट्रक पार्क का निर्माण कार्य प्रगति में है। कोरोना से रक्षा के लिए पहले ही 100% इंडिजीजन कोवैक्सीन की गुजरात के अंकलेश्वर में भारत बायोटेक द्वारा उत्पादित की गई थी। कार्डियक हाईटेक स्टेंट भी पूरे देश को गुजरात से मिल रहे हैं। हाईटेक स्टेंट की देश की 14 उत्पादक कंपनियों में से 11 गुजरात में है। हाईटेक इंट्राओक्यूलर लेंस के उत्पादन में गुजरात का कंट्रीब्यूशन 50% है। ऑर्थोपेडिक इम्प्लांट इंस्ट्रूमेंट के उत्पादन में भी गुजरात लीड ले रहा है। विशेषकर राजकोट, अहमदाबाद और बड़ौदा में बहुत ही अधिक संख्या में इसकी प्रोडक्शन यूनिट कार्यरत है। भारत के कुल फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग में गुजरात की हिस्सेदारी 33% है। गुजरात में आज लगभग 1084 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स WHO के GMP मानकों के अनुसार कार्य कर रही है, जो पूरे देश में ऐसी कुल यूनिट्स का 34% है। गुजरात में फार्मा सेक्टर में कम लागत पर उच्च गुणवत्ता वाले रिसर्च और डेवलपमेंट सुविधा भी मौजूद है। गुजरात मेडिसिन और फार्मास्यूटिकल के सेक्टर में एक लीडिंग एक्सपोर्ट करने वाला राज्य है। गुजरात में फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज को व्यापार करने में और आसानी हो और बेहतर माहौल मिले, इसके लिए गुजरात की सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। मुझे आशा है कि यह कार्यक्रम गुजरात के फार्मा सेक्टर को सस्टेनेबल ग्रोथ प्रदान करेगा। जनवरी 2024 में आयोजित होने जा रहे वाइब्रेंट समिट में सहभागी होने के लिए मैं मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स और फार्मा सेक्टर के जुड़े उद्यमी को आमंत्रित करता हूं। इस मेडटेक एक्सपो के आयोजन के लिए मैं एक बार फिर आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं और अपनी वाणी को विराम देता हूं। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय जय गरवी गुजरात। थैंक यू।
माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आपके मूल्यवान और जानकारीपूर्ण संबोधन और मेडटेक एक्सपो 2023 में आपकी गरिमामय उपस्थिति के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। I would now request Shri Tushar Sharma, Managing Director and GM, Abbott Vascular and Chair, FICCI Medical Device Committee, to kindly extend the vote of thanks. Good afternoon. Honorable Chief Minister of Gujarat, Shri Bhupender Rajnikant Patel ji, Honorable Union Minister of Health and Family Welfare, Chemical and Fertilizers, Dr. Mansukh Mandavia ji, Dr. V.K. Paul, Member Niti Aayog,